जी सर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक। चैट पब्लिक कर दूँ। वीडियो नहीं आ रही मेरी? आ रही है? वहाँ आ रही है। मैं जल्दी आ गया। मैं आज 10 मिनट पहले आया क्लास से। आज घर से ही आना। एनी क्वेश्चन फ्रॉम खलदून? बच्चे आ रहे हैं अभी शुरू नहीं करना चाह रहा। जो कोई सवाल लिखने खलदून पे। मैंने आपको रीडिंग सेंड करवाई थी, आपको मिली थी इस पे खलदून में रीडिंग? नहीं मिली? अच्छा यार आप एक सेकंड। स्टार्ट में मिल गई थी। अली अख्तर ने कहा जी मिली हुई है। वो उसका टाइटल है द इब्न खलदून थ्योरी ऑफ अस्बिया एंड इट्स एप्लीकेशन इन मॉडर्न मुस्लिम सोसाइटी। ग्रुप चेक करें जी, जल्दी बता मुझे, जल्दी चेक करके बताइए। गुड हो गया। वो बच्चे कह रहे हैं मिली हुई पहले। आपकी क्लास का एक ही व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? ओके चलिए। जी जी, मैं वो रिसर्च पेपर है, 6 पेजेस का पेपर होगा। ये सलमान आवाज कोई थी, मेरी आवाज ही ऐसी है वो थी। अब मैं क्या करूं? ओके सर, मैं रीसेंड करवा दूंगा। अगर आपने इसको बचा रीसेंड कर सकते हैं तो वो भी कर दें। मैं रिपीट कर दूं नाम? इब्न खलदून थ्योरी ऑफ अस्बिया एंड इट्स एप्लीकेशन इन मॉडर्न मुस्लिम सोसाइटी। ये तो गूगल करके तो मिल जाएगा। और मेरे आई एम नॉट द एडमिन ऑफ दैट ग्रुप। मैं उस ग्रुप में नहीं हूं तो आई कांट मेक इट पब्लिक। ओके ये शेयर कर दिया जी शहरोज ने भी। यहाँ गूगल से भी कर सकते हैं। अब नहीं कहेगा नहीं मिली। उसामा अब इतना तो बता दिया है, गूगल में इतना तो कर लें यार, लिख दें ये जुमला। आप तो कैसा दोबारा उनसे शेयर क्यों करवा दें? इतने लेथार्जिक हो जाएंगे तो आप सीएसएस नहीं कर पाएंगे। प्लीज जी जी पूछे, ऐसा पूछे सवाल प्लीज। ऐसा जी, can there be any other cause of dislocation of asbiya other than the economic one? No, it starts with सवाल है जी कि क्या economic है और factor है? It starts with economic. There are other factors that come into play later on, but the starting point is economic disparity within an asbiya. Economic starting. देखिए हमने डिफरेंसेस कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो इब्न खलदून ने कहा हम वही लिखेंगे ना। इब्न खलदून ने इकोनॉमिक का कहा तो हम इब्न खलदून का पॉइंट लिखेंगे। मेरी और आपकी राय में तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हाँ क्रिटिसिज्म में कह सकते हैं, यू आर राइट। क्रिटिसिज्म में कह सकते हैं, आइडियोलॉजी कह लें, और बहुत से कल्चरल फैक्टर्स कह सकते हैं, आप बहुत सारे और भी कह सकते हैं। ट्रू। कोई और सवाल? शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में 5 मिनट हो गए, हमने वेट कर लिया। हम थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन बताना चाहता हूँ। यस सर।
यस अली, रेलेवेंस की बात करते हैं, उसकी चाहिए कि मॉडर्न दौर में कंट्रीब्यूशन क्या है रेलेवेंस का। अली नो नो। अच्छा, प्लीज थिंकर में कभी भी आप एग्जांपल नहीं देंगे प्लीज। आपको याद है मैंने कहा था थिंकर में आपने क्या चीजें लिखनी, मैंने बताई थी ये बातें। yes, any force, but that force has to be based on blood relationship. अभी क्लास चल रही है करंट अफेयर्स की, आसान है एग्जाम्पल से मतलब है, जैसे बच्चे करेंगे जी असबिया की एग्जाम्पल आप बलूचिस्तान से दे सकते हैं, बिरादरी सिस्टम दे सकते हैं, आप एग्जाम्पल इस तरह से नहीं देंगे। जिशान करंट अफेयर की क्लास चल रही है, गुलफाम करंट अफेयर की क्लास चल रही है। जिशान कौन सी क्लास चल रही है करंट अफेयर्स की? इस अकेडमी की तो नहीं चल रही। सर मौजूद नहीं है सर। ओ अच्छा सर मौजूद के बोले बोले कितने वक्त होनी गुलफाम? 2:30 पे। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जिशान जिशान आप लें क्लास लें, अब मैं और चीज डिस्कस कर लेता हूँ, आप लें। हसान, सोशियोलॉजी में थोड़ी डायमेंशन और डीप हो जाएगी। सोशियोलॉजिकल सेंस में हमने पॉलिटिकल सेंस में बात की थी, तो आप ठीक कह रही हैं, थोड़ी सी डिफरेंस आ सकता है खासकर सोशियोलॉजी के अंदर। आयशा, हेगल का जो मेन क्रक्स आइडिया था वो मैंने आपको बता दिया था। इफ यू गेट द टाइम तो हम उसको मजीद डिटेल से भी कर लेंगे, बट मेन आइडिया को मैंने बता दिया था कि जो उसको डायलेक्टिक्स है। आंसर वासिफ यस, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। फराबी, मुझे मैं वैसे फराबी से ज्यादा इमाम गजाली पे फोकस करता हूँ। फराबी और गजाली आपको खुद करिएगा, मैं आपको रीडिंग दूंगा, अगर आप ना समझिएगा मैं खुद करा दूंगा आपको फराबी और गजाली, लेकिन आखिर में जाके करेंगे, बहुत आसान है। फराबी की कहानियां खाली आपने बाद में क्या करूंगा, आपने बाद में कहना सर फराबी क्यों करवाया आपने। मवारदी की थ्योरी से ज्यादा सिंपलिस्टिक थ्योरी उसकी है फराबी, बट पेपर में कभी कभी फराबी में सवाल आता है, इमाम गजाली में भी कभी कभी आता है। वारिस में क्यों इशू है? अच्छा सुबह से आ जाओ, सुबह क्लास में था। एक मिनट, अब बताइएगा जी, अभी भी है जी? अभी मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, एक मिनट आप बताइएगा बच्चों। अब बेहतर है? ओके, आई अज्यूम अब आवाज बेहतर है। अच्छा, अब 4-5-6 सवाल आए हुए हैं, मैं याद करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अली अपना सवाल दोबारा रिपीट करना, मैं भूल गया था, सॉरी। इलाहाबाद की थ्योरीज आप जो अभी करेंगे, इलाहाबाद को भी स्टार्ट करना है, इलाहाबाद को डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न मजीद करवाएंगे या बस हेगल मॉन्टेस्क में करूंगा? अच्छा आपका सवाल भी है, मॉन्टेस्क करूंगा जब अमेरिका सिस्टम पढ़ाएंगे, फिर उसमें मॉन्टेस्क भी पढ़ाऊंगा, मतलब बिल्कुल आखिर में जाके आखिरी 3-4 लेक्चर में से एक लेक्चर में मॉन्टेस्क पे करूंगा। हेगल पे मैंने थोड़ा सा करवा दिया है, अगर आप कहेंगे तो आखिर में जाके मजीद कर लेंगे। आपने इन हेगल मॉन्टेस्क के अलावा एक और करना है, जेएस मिल और उसकी थ्योरी ऑफ लिबर्टी। वो मैं नहीं करवा पाऊंगा लिबर्टी की थ्योरी, बट आप वो कर लीजिएगा। उसके अलावा और थिंक करके आपको एमसीक्यूज देखने हैं, उनकी किताबों के नाम वगैरह, बाकी आपने नहीं देखना, वो करने की जरूरत नहीं। अली अख्तर आपका सवाल था, प्लीज दोबारा कर दें। आई हैव कंफ्यूजन इन कार्ल मार्क्स रेगुलरिज्म 4 स्टेप कांसेप्ट। मेरा पूछें सवाल जी। हेगल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ट्रू अवेस जी करें, आसान करें करें। अभी हम इररिलेवेंट डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज करंट अफेयर की क्लास चल रही है, तो मैं चाह रहा हूँ आप जब जितने भी सवाल दिमाग में सारे पूछें।
हाँ जी, हो जाएगी, हो जाएगी। मैं सलमान आप आवाज फिर अच्छा, बाकियों को भी आवाज डबल आ रही है? नहीं फिर नहीं, फिर इसका मतलब सलमान आपकी तरफ से मसला है। फाद मैंने भी थिंकर्स के बारे में बता दिया सारी चीजें। मैं एक जैसी बात कर रहा हूँ सबसे जी, अगर दो लोगों को भी ठीक आवाज आ रही है इसका मतलब बाकी लोगों के साथ मसला हो सकता है। तो ये आप देख लीजिए। सर मैंने पेपर 2 प्रिपेयर करना है मॉक्स के लिए, वो कैसे करूँ, थोड़ी गाइड दे दें। उसका सिस्टम और उससे प्रश्न पढ़ा तो कर लिया है बाकी। हसन कैन यू ड्रॉप मी एन ईमेल, मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका डिटेल्स। टू फाइंड माय ईमेल गो इनटू गूगल, आपको मिल जाएगा। महर मैंने कौन से नोट्स देने थे तो ये बताएं जरा। मैंने आप लोगों को शो कॉज नोटिस देना था, नोट्स नहीं देने कोई। अभी स्टार्ट नहीं हुई फर्म इस्लामिक क्लासेस। अच्छा आप लोग थोड़ा सा लेट आए जी मेरे ख्याल में। हम लोग मुझसे बात कर चुके हैं, वो ऑलरेडी मैडम ने शेयर किए हुए ग्रुप में। चैट बड़ी करना, इतने सवाल आ गए। थॉमस की थ्योरी है उसमें और डिवाइन रूल ऑफ लॉ में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। सर चेंज हुई है थॉमस आपकी थ्योरी और उसमें और डिवाइन रूल ऑफ लॉ में। नहीं जी, डिवाइन रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट नहीं है। थॉमस की थ्योरी और डिवाइन थ्योरी में बड़ा फर्क है, द डिफरेंस। दोबारा करवा दूं। What is the difference between Hegel and dialectical concept? मैं आज हमने बहुत डिटेल से बात की थी हेगल में और मार्क्स के डिफरेंसेस की बात की थी। 3-4 डिफरेंसेस थे। एक इसका आइडिया, दूसरे का थीसिस, एक का मटेरियल, एक का नॉन मटेरियल, एक का इनफिनिट, एक का लिमिटेड। सो डिफरेंट हम इसलिए इज हेगल इंपॉर्टेंट? यस इट इज, हेगल इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। लास्ट 2 साल से आ रहा है, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। थिंकर के लिए कौन कौन सी डायमेंशन करनी चाहिए? मेरे ख्याल में मैं हर थिंकर के साथ बताता रहा हूं कौन सी डायमेंशन करनी है। हर थिंकर के साथ हमने एक्सप्लेन किए हुए। व्हाट अबाउट दोनों थ्योरी ऑफ स्टेट, दैट्स नॉट रेलेवेंट अहमद। वैसे तो मसला की बुक लिखी हुई है बट दैट्स नॉट रेलेवेंट। चैट बुक इतने सारे सवाल हैं, सवाल करने वाले बच्चे भी हैं सारे। बस ठीक है। व्हाट अबाउट बिकॉज़ उसकी थ्योरी काफी लगती है, कंपल्सरी शुड बी फोकस ऑन इट। किसकी? हमना हेगल की। हाँ, हेगल की थ्योरी आपने कर ली है, डायलेक्टिक्स वाली थ्योरी, स्पिरिट वाली थ्योरी, डायलेक्टिक्स वाली थ्योरी। Is it correct to call Hegel solution of all states and review of all ages? Argue इस क्वेश्चन का मैं बताना। देखिए क्वेश्चन का मैं इसलिए बताऊंगा जी, ये एक हमारी क्लास होगी जिसके अंदर मैंने आपको भी बुलाना है और उस क्लास के अंदर पास पेपर पर डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पर मैं अभी डिस्कस नहीं किया जी, आप लोग ये वैसे वेट कर रहे थे, अभी क्लास शुरू नहीं की, मैं सिर्फ क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ पहले सवाल का। लिमिटेड कॉन्सेप्ट समझाओ, मेरा मैंने समझा दिया, मेन डिफरेंस बताया कि एक मटेरियल है, एक में नॉन मटेरियल है, एक जो स्पिरिचुअल बात करता है, दूसरा मटेरियल इकोनॉमिक बात करता है। एक क्या डायलेक्टिक्स है वो रिफॉर्म्स तरफ लेकर जाता है, हेगल मार्क्स का जो है वो रिफॉर्म्स तरफ लेकर नहीं जा रहा, वो वर्ड्स बता रहा है उसको। थ्योरी ऑफ हेजेमनी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ हेजेमनी नो, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने नहीं डिस्कस किया हेगल को सेपरेटली, बट मैंने बेसिक आउटलाइन दे दी है। आई वुड लाइक यू टू रीड इट और एट द एंड जाके अगर आपको समझ ना आए तो उसमें थोड़ा सा मजीद इस पे बात करूंगा, बट आई प्राइमरली लीव इट टू स्टूडेंट्स टू रीड मोर ऑन दैट। बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट तो हम उसको समझ लेंगे जी। आई नो जी। कोई फाइल दोबारा शेयर कर दे प्लीज। मुस्लिम फिलॉसफी की रीडिंग दोबारा शेयर कर देनी कोई क्लास। यस लेट्स स्टार्ट। मेरे ख्याल में क्लास शुरू कर दे आगे बढ़े। उसामा कोई बात नहीं, कौन सी ओपिनियन है आपको तो अभी शो कर जी। लेट्स स्टार्ट। ओके, ये दोनों शेयर करती हैं शरोज ने, जिनको रीडिंग चाहिए दोबारा यहां से डाउनलोड करते हैं। हमें शुरू करना है अल्लामा इकबाल से। अल्लामा इकबाल की जो थ्योरी है,
नहीं सॉरी, इब्न खल्दून का पहले क्रिटिसिज्म और रेलेवेंस, यस 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 यस, ये लिखा है पहले नंबर पे इब्न खल्दून की रेलेवेंस, मॉडर्न डे इंपॉर्टेंस। जल्दी जल्दी से मैं आपको बता दूं। वन, इब्न खल्दून इज considered to be father of modern sociology। ऐसा ही है, he is considered to be the father of modern sociology। फेमिनिस्ट मूवमेंट में इस बात को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, बट हम करेंगे नहीं। फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी क्यों? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन who have given a theory about social change। क्वेश्चन है व्हाट अबाउट अगस्त कॉम्टे? मैं सोशियोलॉजिस्ट नहीं हूं, आई हैवंट स्टडीड अगस्त कॉम्टे, सॉरी, सो नो कंपैरिजन ऑफ दोनों विद सोशियोलॉजिस्ट्स। So he was the first thinker, not the only one obviously, but the first thinker who have given this idea what is the basis of social relationships, making of social relations, breaking of social chains. He was the first one to produce a theory on that. Second, he is considered to be the father of modern history। Ibn Khaldun is the first thinker the basis of who provides the basis of historical developments। कैसे? इसने कहा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन अमंग असबिया। यानी तारीख में हमने राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर देखना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को देखना हो, तो हमें उस माशरे के अंदर असबिया को देखना पड़ेगा। So he, in that way, provided a major contribution towards study of history। Next, he is the pioneer of not खाली इकोनॉमिक्स ना गएगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी गएगा। कैसे? बिकॉज ही वॉज नॉट द फर्स्ट वन, प्लीज ये ना लिखिए फर्स्ट वन, पहला लिखा, वैसे तो अरिस्टोटल ने भी कहा होगा, अरिस्टोटल का भी कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के ऊपर। ही वॉज द पायनियर ऑफ this idea that economic factors are the major factors determining socio-political life in a state। That economic factors are the most important factors in determining socio-political life in a state। Another contribution, no, obviously not for they wrote, ओरिएंटलिस्ट तो बिलीव नहीं करते, हम तो पूरे साइंस के अंदर जनरली बात करें। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट
पॉलिटिकल साइंस में है, आप इसे कुछ लोगों ने बेसिक पढ़ा हो। इकोनॉमिक्स में क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। आइडिया है इसका? बेसिक मैक्रो नेशनल लेवल पे, माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे बात होती है, इंडिविजुअल लेवल पे। सो नेशनल लेवल एक हायर लेवल और एक इंडिविजुअल स्टेट, सोसाइटी इंडिविजुअल स्टेट। अच्छा, आप पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा। बिफोर इब्न खल्दून, all the major philosophers or thinkers before इब्न खल्दून, all major philosophers, चाहे मैं मुस्लिम और वेस्टर्न दोनों की बात करूं, they were more concerned about the macro level political changes. मतलब they were concerned about revolutions, they were concerned about the rulers and their functions and role. मैक्रो, MACRO, मैक्रो, बड़े लेवल, नेशनल। However, Ibn Khaldun is the first thinker Ibn Khaldun was the first one who focused on studying the society, who focused on society and impacts of sociological changes, on macro politics, national politics. असद हम देख रहे हैं इब्न खल्दून की रेलेवेंस। ये बात आप अगर जितनी मुश्किल समझाइए, इसको मैं आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ जरा सा। इसी पॉइंट को मैं आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले प्लेटो और एरिस्टोटल जितने हम पढ़ चुके हैं, उनका ख्याल था स्टेट, रूलर्स वो जैसे होंगे उसका इंपैक्ट आएगा सोसाइटी के ऊपर। That will affect individuals, that will affect society. ये हिस्टोरिकल टॉप डाउन अप्रोच है इस वाली में, यस। बट स्टेट इफेक्ट करती है सोसाइटी को, रूलर इफेक्ट करते हैं सोसाइटी को। इब्न खल्दून पहला राइटर है जिसने कहा कि नहीं, इट इज सोसाइटी एंड द चेंजेस इन सोसाइटी दैट इफेक्ट स्टेट। इट्स कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। माइक्रो लेवल in society affects the macro level. Yes, अब्दुल। लेकिन अब्दुल, हमें तो किसी ने कहा था अगर हुक्मरान चोर ना हो तो आवाम ठीक होती है, ऐसे ही कहा गया था ना पाकिस्तान में। अथॉरिटेरियन मॉडल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट है आजकल की। अथॉरिटेरियन मॉडल ये कहता है कि स्टेट में रूलर ठीक हो जाए, नीचे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, सोसाइटी चेंज हो जाती है। लेकिन इब्न खल्दून ने कहा नहीं, स्टेट है वो आवाम को इफेक्ट नहीं करती, सोसाइटी को इफेक्ट नहीं करती। इट इज सोसाइटी दैट बिल्ड्स द स्टेट, दैट इफेक्ट्स द स्टेट। राइज एंड फॉल ऑफ स्टेट डिपेंड्स अपॉन द राइज एंड फॉल ऑफ अ स्फीयर इन सोसाइटी।
असबिया स्टेट पर डिपेंड नहीं करती, स्टेट असबिया पर डिपेंड करती। Yes, Amna. This is called democratic approach. Authoritarian approach ये कहती है state should dictate. जो democratic approach कहती नहीं, society should dictate the state. So he was the first one who have given this approach a social impact on state, and therefore that's why we call him a kind of ideological founder of democracy. He didn't give the theory of democracy, but the idea that society can change the state, that idea came from him. Social contract theory क्या है? Who created state? It is the society, the people that contracted to form a state. इसने ये नहीं कहा कि उन्होंने स्टेट बनाई है, पर इसने ये जरूर कहा कि स्टेट को इफेक्ट या लो करना होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन है उसकी जी उस हवाले से बॉटम अप अप्रोच जो डेमोक्रेटिक अप्रोच है दैट वाज गिवन बाय हिम। समझिए बिल्कुल फिलोसफी नहीं बनना, परेशानी आप बिल्कुल नहीं, अपने दिमाग में बिल्कुल बोल दिया आप लोगों ने प्लीज, इसलिए वही लिखना है जो उसने कहा है, जो उसने कहा है वो लिखेंगे, आप पाकिस्तानी फिक्र ना करें प्लीज, सीएसएस की फिक्र करें। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ये मेजर है लास्ट पॉइंट। Ibn Khaldun's theory is considered to be, जी जी अल्लाह मुझे अच्छी तरह पता है। Ibn Khaldun's theory is considered to be the theory that for the first time provided a raw explanation of dialectics. Raw explanation of dialectics. कैसे dialectics? Asbiya and de-Asbiya, and their clash results into a new kind of rise, a new Asbiya. ऐसे ही होता है, एक Asbiya है, it is always challenged by another Asbiya, and the one who challenges it, that dominates, balances out, और फिर बन जाता है। एक स्टेट में एक Asbiya है जो मेन कोर में रहती है, पैरेंटी में डिफरेंट Asbiya है, ऐसे ही, एंड क्लैश टेक प्लेस ऑल द टाइम, आपस में भी इनका भी क्लैश चलता है। उस क्लैश के नतीजे में somehow this got split up, ये स्प्लिट अप हो जाती है, this grows in power and comes into वो स्ट्रॉन्गर होती जाती है, ग्रो करती है, स्ट्रगल करती है और पावर में आ जाती है। So there's always a clash, and the change in the state happens because of the clash. The interaction between two is what we call the dialectics, and the clash between Asbiya creates changes. इसलिए मैंने कहा ना crude form में, raw form में, it's the kind of dialectics. History is the history of clash among Asbiya. History moves because of clashes. That idea is called dialectics. मैंने कहा था कि ब्लड रिलेशन इज द फर्स्ट कॉमन फैक्टर, व्हेयर मैम सेड रिलीजन इज द फर्स्ट फैक्टर जी। मैं मैम को अगर डिसएग्री करूंगा तो एंटी फेमिनिस्ट कहलाऊंगा, पहले ये बता दें। अगर नहीं कहलाऊंगा तो सॉरी जी, आई बेग टू डिफर। अगर आप लोग पढ़िएगा अपने खल्दून को, उसके नजदीक रिलीजन इज अ फैक्टर बट इट इज अ सेकेंडरी फैक्टर, ठीक है। उसका रिलीजन इज अ फैक्टर बट इट्स नॉट द प्राइमरी फैक्टर। आप में से कोई और लोग पढ़ो, इवन इन सोशियोलॉजी this cannot change. आपने किसी ने पढ़ा है तो तुमको खुद से, it's always even in sociological perspective जी, even in sociological perspective it is blood relations.
Anyway, डर लगता है फैमिली स्पेशल। ओके, दिस इज ऑल जी। क्रिटिसिज्म आप कर लीजिएगा, खुद ही कर लीजिएगा क्रिटिसिज्म। लेट्स गो टू लैंग्वेज। ये डायलेक्टिक्स वाला पॉइंट एक बार रिपीट शॉर्टली कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू मेथड 2, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ क्लैश अमंग असबिया। असबिया के दरमियान क्लैश होता है जिससे हिस्ट्री मूव करती है, हिस्ट्री ग्रो करती है बिकॉज ऑफ द क्लैश अमंग असबिया, which actually is a raw idea of dialectics, which states that clash between the two results in the progression. जिसको आप नहीं कहते क्रिटिकल थिंकिंग। इफ यू डू नॉट हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग तो प्रोग्रेस नहीं होगी ना। यस नो ट्रू। लेट्स गो टू लैंग्वेज बॉडी जाते हैं। सॉरी, इलाहाबाद में जो कॉन्सेप्ट है बताऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, पाकिस्तान अफेयर्स में, और हमारा पॉलिटिकल साइंस में पेपर 2 के अंदर भी आएगा। अच्छा, तो इसको आप तीनों जगह भी यूज कीजिएगा। इलाहाबाद की जो डिस्कशन है इसको पाकिस्तान अफेयर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 के अंदर, और पेपर 2 के अंदर इलाहाबाद पे दोबारा सवाल आता है तो वहां भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, सेम डिस्कशन करेंगे। 1877 19 जी मैं डीप करूंगा इसको, मैं डीप करूंगा 1938। क्रिटिसिज्म फात कर लीजिएगा आप प्लीज अपने खतून का। यस अहमद ट्रू, यस यू कैन। ओके, जल्दी जल्दी बायोग्राफी आपको आती है बट शॉर्टली से बता दूं। ही वाज बोर्न इन सियालकोट। बचपन से पढ़ के थक गए होंगे आप लोग। ही वाज बोर्न इन सियालकोट, गॉट हिज बेसिक एजुकेशन फ्रॉम देयर। Later on, yes, Wahab, yes, through which history is progressing. Okay, मैं इस चीज की बायोग्राफी चेंज नहीं करा रहा। Later on, he came to Lahore. Later on, he came to Lahore for higher study. GC में yes, he did his BA and MA from GC. अच्छा, प्लीज इसको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ना लिखिएगा, उस वक्त यूनिवर्सिटी नहीं थी, उसको कॉलेज नहीं था। He did his masters in philosophy. After which, he started teaching. After which he started teaching in government college. Then he went abroad, he went to Europe for higher studies. He went to Europe for his higher studies, where he did his bar at law, या कमेंट्स बताते हैं कि आप सारे लाहौर से हैं या फैसलाबाद से हैं। अच्छा, so he did his 2 degrees. One, he did his PhD from Europe, from Germany,
and he did his Barrett Law from UK. आप पता है PhD यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख जर्मनी से की। Barrett Law कौन से किया था ये मुझे नहीं पता, जहाँ से किया था, UK से किया था। अच्छा, लिंकन से किया था, ओके। अच्छा, जनाथन ने वहीं से किया, दोनों ने एक से किया था। Interesting. Anyway, after his study and stay in Europe, he returned. नहीं, they were against each other, by the way. उनके strong conflicts एक दूसरे के। After studying and staying in Europe, he returned India. Barrett Law क्या होता है? अभी लॉ वाले नीचे लिखते हैं, मुझे भी नहीं पता क्या होता है। मैं हमें कोई सर्टिफिकेशन होती है या मेंबरशिप होती है। अच्छा, on return to India, he started doing three things. He started doing three things. One, he practiced law, entered into politics, joined Muslim League. Joined politics and entered All India Muslim League. Yes, All India Muslim League, not Muslim League Awards. And lastly, started writing poetry. Poetry की उसने। Poetry start तो नहीं की, continue की। Poetry तो पहले से लिख रहे थे। He continued with the poetry. But politics was new. Law practice was new. इसको मैंने और तरह से देखा। Practicing law was his profession. His passion was poetry, and his surrounding environment convinced him in entering into politics. Poetry was his passion. Politics was the need of time, and पैसों के लिए लॉ प्रैक्टिस करो। सिंपल सी वो उनका रोजगार था। Yes. अच्छा, he died in 1938. April में डेथ हुई थी, 21 April 1938। लाहौर में उनकी he died in लाहौर। अच्छा, अपने इस्लामाबाद में मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, इस्लामिक नेशनलिज्म, जिसको उम्मा भी कहते हैं, मिलत भी कहते हैं। His concept of ummah, his concept of Islamic nationalism. अच्छा, खुद ही पे भी सवाल आता है, खुद ही को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, खुद ही पे। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट भी रखते हैं। Why he gave the theory of Islamic nationalism? Context. Why he gave the theory of ummah? Why? What factors influenced him? अब उन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी उनकी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं उनकी बायोग्राफी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं और उसके अंदर से हम डिराइव करेंगे कॉन्टेक्स्ट। अल्लामा इकबाल इज लाइफ, अब कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, व्हाई ही गिव द थ्योरी ऑफ इस्लामिक नेशनलिज्म, उम्मा की थ्योरी क्यों दी। अल्लामा इकबाल इज लाइफ can be divided into three phases. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। One,
First phase. His early life before departure for Europe. Allama Iqbal had studied under European and particularly British teachers. हम पढ़ते हैं सर आर्नल्ड वगैरह का नाम पढ़ते हैं मेरे ख्याल में. Different teachers हैं जो उनको पढ़ाते हैं, mostly Europeans and Britishers. He studied philosophy, under them. School में भी और college में भी. So under Western teachers, studying Western curricula through Western literature had influenced his ideas in a Western mindset. अच्छा, मैं इस पर रिपीट करता हूँ. वेस्टर्न टीचर्स थे, कोर्स जो पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, फिलॉसफी, वेस्टर्न नॉलेज, एंड ही वाज स्टडीइंग वेस्टर्न लिटरेचर. यूरोप से आया हुआ लिटरेचर, फिलॉसफी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, वेस्टर्न टीचर्स उनको पढ़ा रहे. उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? द इम्पैक्ट वाज दैट हिज आइडियाज वर शेप्ड in a particular Western direction. मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं. एक एग्जांपल यहां पे बताऊंगा, जस्ट जो हमारे टॉपिक से रिलेट करती है, लिखेंगे आप पे. His idea, for example, about nationalism was derived from Western not progressive, not regressive, इस qualitative comment में नहीं आएंगे उसको. For example, the idea of nationalism that Iqbal hold was influenced from Western scholarship. कैसे? हमने नहीं पढ़ा, हम पढ़ेंगे. अगला लेक्चर प्रॉब्लम हमारा इसी में शुरू होगा. या शायद आपने से कुछ लोगों ने सुना हो करंट अफेयर में किसी पे, जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन और नेशनलिज्म है, इट डिराइव्ड फ्रॉम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. ये यहां पे लिखेंगे आप. हिज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म, जो कि वेस्ट का भी कॉन्सेप्ट है, इट डिराइव्स फ्रॉम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, where nation was defined as people, defined as the people inhabiting the territory of the state. Yes, nation state system इसको कहते हैं. नेशन क्या होगी? एक टेरिटरी के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को, एक टेरिटरी के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को एक नेशन कहा जाएगा, irrespective of their religious identities. आप ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, WESTPHALIA, ये हमने लिख दी थी वेस्टफेलिया.
कि एक टेरिटरी, मुल्क की टेरिटरी, एक स्टेट की टेरिटरी के अंदर रहने वाले तमाम लोगों की नेशनहुड सेम होगी, वो एक ही नेशन होंगे। आपसे पूछना एक सवाल, सीएसएस का फॉर्म फिल किया होगा आप लोगों ने, अगर किया है, नेशनलिटी के खाने में क्या लिखा है? अपना मजहब लिखा है, पाकिस्तानी लिखा है, पाकिस्तानी, irrespective of their religious identity about it. एक क्रिश्चियन ने क्या लिखा होगा? पाकिस्तानी। If somebody is from you is Christian, if you are a Jew, क्या लिखेंगे? लाहौर में रहने वाला Jew क्या लिखेगा? पाकिस्तान। सिख, हिंदू। आपका रिलीजन आपकी नेशनैलिटी को डिफाइन नहीं करता। आपकी नेशनैलिटी को डिफाइन करता है where your territorial jurisdiction is, where you are located. महमूद हैं यूज पाकिस्तान। Anyway, so point is कि आपकी नेशनैलिटी जो है वो लिंक करती है आपकी लोकेशन है। अच्छा, इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की नेशनैलिटी क्या होगी? इंडियन होगी। सो आपकी जो नेशनहुड है वो लिंक करती है टेरिटरी से। ये आइडिया डेवलप हुआ, वन स्टेट इज इक्वल टू वन नेशन, दैट आइडिया वाज डेवलप्ड इन टीडी ऑफ वेस्ट इंडिया। Allama was so profoundly affected by such ideas कि उन्होंने फिर पोएम लिखी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम है बुलबुलें इसकी, ये है गुलिस्तान हमारा। For him, India was a nation, not Muslims. ये बात समझ आ रही? सुनीला, इसलिए बता रहा हूं, एक बात की पॉइंट आपने कहा जो मुस्लिम के बारे में या ठीक है, लेकिन जब पहले थे, यूरोप जाने से पहले जो थे, उनकी कोई पोइट्री मुसलमानों के बारे में नहीं, उनकी मोस्टली है गजलें। पार्टीशन सॉरी, यूरोप जाने से पहले उन्होंने मोस्टली लिखे हैं गजलें, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कौमी तराना है इंडिया का। बिकॉज इररिस्पेक्टिव आपका कोई भी रिलीजन है, हम सारे हिंदुस्तानी हैं, नेशन। जी शेर लिखना ही आप लोगों ने पेपर में, लामा की राइटिंग में पोइट्री है कोई, शेर ही है सारी, सही राइटिंग में पोइट्री कह रहा हूं, आप उनकी प्रोज तो है कोई नहीं, उनकी सारी पोइट्री है, तो उनको कोट करना है तो उनकी पोइट्री को कोट करना ऑब्वियसली। अच्छा, अब अगला सवाल, रोमन में लिखनी है या उर्दू में लिखनी है? रोमन में आपको लगता है मुनासिब रहेगा? डू यू थिंक? चले जो भी करिएगा, पर अंग्रेजी ट्रांसलेशन ना करिए उस शेर। रोमन नहीं लिखनी, रोमन नहीं लिखनी, उर्दू लिखना है प्लीज। रोमन विल बी अ बैड इंप्रेशन। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अच्छा, जब नहीं, यूरोप के डिपार्चर से पहले की बात करेंगे हम, यूरोप के डिपार्चर से पहले की बात करें, शुरू की बात करें, बिल्कुल शुरू की, जब यहां पे पढ़ रहे थे यूरोपियन टीचर से। आपको एक मतलब है, जिस कॉलेज में यूरोपियन टीचर पढ़ाया करते थे, लोकल तो नहीं होते थे मोस्टली, यहां पे फिलॉसफी सब्जेक्ट था वो यूरोपियन था, तो ये जाने से पहले की बात। जब यूरोप गए, व्हेन ही वेंट टू यूरोप, वहां उन्होंने पीएचडी की। जल्दी से अपना टॉपिक क्या था? एनीबॉडी? फिलॉसफी में पीएचडी थी, पर टॉपिक क्या था डिसर्टेशन का? मैं खुद ही बता देता हूं, डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स नहीं, मेटाफिजिक्स, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। अब रहमान थोड़ा सब्र कर लेना, मैं भी आ रहा हूं। पहले फेज में कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, फिर चले गए यूरोप, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स, ये सेकंड फेज शुरू हो रहा है। यस,
सेकंड फेज शुरू होता है जब वो यूरोप चले गए. In Europe, he studied about development of metaphysics in Persia. Metaphysics मतलब beyond material things. He studied metaphysics, development of metaphysics in Persia, not Prussia. Prussia जर्मनी में और Prussia में कोई metaphysics नहीं. Metaphysics in Persia, ईरान की बात है. Metaphysics के different meaning है. Literal मतलब तो obviously beyond physical. Yes, some not ancient, old Germany. 1871 से पहले उसको Prussia लगता है. So पर्शिया के अंदर, ईरान के अंदर मेटाफिजिक्स की डेवलपमेंट. मेटाफिजिक्स की मतलब है बियॉन्ड फिजिकल थिंग्स, बियॉन्ड मटेरियल थिंग्स. बट यहां पे मतलब है इस्लामिक स्पिरिचुअलिज्म. Allama Iqbal did his PhD on spiritual history of Islam in Persia. ये उसकी सिंपल लैंग्वेज है, समझ लो. टाइटल था डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, बट शॉर्ट वर्ड्स में he studied the growth of evolution of Islamic spiritualism in Iran. इसलिए देखें उनकी लैंग्वेज पर्शियन है. He wrote most of his poetry in Persian. Now, very interesting story. To understand the Islamic spiritualism in Persia, he had to study about Islam and Islamic history. For his dissertation, अब मेरी आवाज बाकी लोगों को ठीक आ रही है? Okay. So in order to write his dissertation, he studied about Islam and Islamic history. कंट्रास्ट चेक करें. जब इंडिया में थे, मुसलमानों के दरमियान थे, तो यूरोपियन से पढ़ रहे थे, यूरोपियन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे. यूरोप गए तो इस्लाम को पढ़ना शुरू किया. He was studying Islam in Europe and he was living in a European society. He was living and observing the European society, but studying Islam. Osama, in order to write his dissertation या PhD, thesis जिसको कहते हैं, he was studying Islam in Europe while observing their society. हमारी किताबों में तो कुछ और लिखा है. हमारी किताबों में लिखा है कि जी यूरोप की सोसाइटी को ऑब्जर्व करने के बाद उनको ख्याल आया. दैट इज पार्टली ट्रू, बट दूसरी बात नहीं बताते, उन्हें पहले इस्लाम को भी नहीं पता चलता था. He didn't study Islam much deeper. जिस तरह हम नॉर्मल छोटा सा पढ़ते हैं वैसे वो तो पढ़ा था उन्होंने. He didn't go deep into Islamic history. Allama Iqbal, when he studied Islam in depth, the actual European state and society, he came to this conclusion that Islam is distinctive religion and Islamic
principles, Islamic concepts are entirely different from the Western principles and concepts. Islam and Islamic principles and Islamic concepts are entirely different, distinguished from Western concepts and Western principles. Social, political, economic, in every way, Islam is entirely distinctive and different. फिर उन्होंने वो शेर लिखा, अपनी मिल्लत पे कियास अक़वामे मग़रिब से न कर, खास है तरकीबे कौमे रसूले हाशिमी। They are incomparable. They are entirely different things. ये शेर आपको पता ही है, लफ्ज़ी कोई मुश्किल नहीं है। अपनी मिल्लत पे कयास अक़वामे मग़रिब से ना, कयास से मतलब कंपैरिजन। Do not judge। अपनी मिल्लत पे कयास अक़वामे मग़रिब से ना, वेस्टर्न नेशंस से कंपैटिबिलिटी ना देखेंगे। Do not judge them, do not judge Islam from the perspective of the Western notions. खास है तरकीबे कौमे रसूले हाशिमी, जो मुस्लिमनेस है, that is distinctive। खास का मतलब है distinctive है, different है, बेनजीर है। Islam has its own world। जी जी ऑब्वियसली रोहन, यस, ये उन्होंने लिखा। ये आइडिया समझ आ रहा है आपको उनका? तो जब इस्लाम इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड भी तो डिफरेंट होगा ना। हमारा जो टॉपिक है नेशन का कॉन्सेप्ट, मुस्लिम नेशनलिज्म, हम इसी में रहेंगे। हम जमहूरियत के सिस्टम नहीं देखेंगे, हम बाकी इकोनॉमिक सिस्टम का पढ़ाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड। तो बिकॉज इस्लाम इज अ डिस्टिंक्टिव रिलीजन हैविंग एंटायरली इट्स ओन conceptual issues, it has its own conceptual understandings, so the concept of nation is also different। So Allama Iqbal said, is point here, Allama Iqbal says that Western concept of nationhood is based on territory, while in Islam it is based on religious identity। उन्होंने कहा इस्लाम में आपकी नेशनहुड टेरिटरी पे बेस नहीं करती, आपकी नेशनहुड बेस करती है रिलीजन। वेस्ट वाले गलत नहीं है, बट डिफरेंट है, वो डिफरेंट है हमसे। उनके नजदीक टेरिटरी पे करती होगी, वेस्ट एरिया में क्या दिया तो क्या दिया। हमारा डिसीजन वेस्ट एरिया में नहीं हुआ, हमारा डिसीजन मक्का में हुआ। In Islam, the nationhood depends on religion and not on territory। This is फिर थर्ड फेज शुरू होता है, जब फिर वो यूरोप से जब वापस आए, he was entirely a different man। फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पीछे रह गया, वो रिग्रेट्स में आ गया, पोस्ट रिग्रेट मूवमेंट। यस ऐसे ट्रू, नील के साहिल से लेकर तब खत काशगर, दैट्स ट्रू। सो द पॉइंट इज ये मेन कॉन्टेक्स्ट है जी। तो मैं अगर कॉन्टेक्स्ट को आसान से समझाऊं, तो अगर वो ना जाते अगर पीएचडी फिलॉसफी
फिजिक्स में करते हैं, जिसका ऊपर किसी ने लिखा नहीं था, तो क्या उनकी ये थ्योरी होती है? नहीं। So this is the main point जी। फेज 3 है, उसके बाद फिर जब इंडिया वापस आते हैं तो फेज 2 जो है ना वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट वाज ड्यूरिंग हिज स्टे ओवर देयर दैट हैड इंपैक्टेड एवरीथिंग। प्रो यूनिफिकेशन नो नो, अभी हम अब आते हैं इसकी मुश्किल। लेट्स मूव जी। अच्छा अजान हो रही है, देखो ओके जी। ओके लेट्स नाउ जी, ये मेरे कॉन्टेक्स्ट है जिनकी थ्योरी का बेसिक पॉइंट था। लेट्स मूव नाउ एंड अंडरस्टैंड थ्योरी मेंशन। अच्छा थ्योरी आसान है, बाकी कहानियां हैं सारी, मेन चीज का कॉन्टेक्स्ट है। अल्लामा इकबाल says that every Muslim, he says that every Muslim is connected with other Muslims through an unbreakable bond of Islam. Every Muslim is connected with other Muslims through an unbreakable bond of Islam. अब ये अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, जो भी मतलब वही कह रहे हैं, और ये बातें कुछ प्रोज में नहीं है, मैंने किताब का नाम नहीं लिखवाया, वैसे आपको आते हैं किताबों के नाम।
इतनी सारी किताबों के नाम है, अब पता ना कि किताबों की सारी शायराना किताबें हैं, शायरी की नज़मों की किताबें हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील और जो भी है, प्रोज नहीं है सारा ऐसा जो भी। हाँ, उनकी खुतबात का इजाज़तनामा है। कमान वो किताब नहीं है रिकंस्ट्रक्शन, वो कंपाइलेशन ऑफ हिज सरमन्स है, वो कंपाइल्ड उनके जितने लेक्चर्स हैं उसकी कंपाइलेशन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सॉलिड, बट है थोड़ा सा मरियम आई गॉट अ बिट ऑफ यू। ओके, अब मुझे डराई ना प्लीज, अब आगे चलते हैं सीधे। प्लीज मुझे ना डराए, मेरे चैट प्राइवेट कर देंगे आप लोगों की, मुझे ना डराए। ओके, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट। अच्छा, तो उनकी ये जो रेफरेंस जो है वो पोएम से है, उसकी मैं ट्रांसलेशन कर दूं। अच्छा, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस्लाम के अंदर, इस्लाम जो है वो एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है बिटवीन ऑल मुस्लिम्स। इस्लाम के अंदर क्या चीज, व्हाट पर्टिकुलर इन इस्लाम? ही सेज that every Muslim is connected with every other Muslim by two main elements. There are two things that connect Muslims across the world. One, the belief in oneness of Allah, वहदानियत का कॉन्सेप्ट, the belief that there is no God but Allah, जिसको सिंगुलरिटी ऑफ अल्लाह भी कहते हैं सर, शायद अगर ये अप्रोप्रिएट वर्ड है। So oneness of Allah, that's the point, तौहीद का कॉन्सेप्ट, वहदानियत का कॉन्सेप्ट, that binds all Muslims together. So you can be a Muslim of any color, any territory, but this is common between you. This unites you. And second is the belief in prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. समैया उन्होंने नहीं कहा। अल्लामा इकबाल पे आप शायद जानते होंगे, ये इल्जाम भी लगा that he had supported Ahmadis, लेकिन इस डिबेट में हम नहीं जाएंगे, कंट्रोवर्शियल डिबेट हो जाएगी, so let's not go on that, तो हमसे टॉपिक से रिलेट भी नहीं करती। उन्होंने कहा द प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अब एक कलमा तैयबा की ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। There are two elements in it. Believe in oneness of Allah, and second is believe in the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You can be in any part of the world. You can belong to any state. But if you believe in these two things, you come within the orbit of Muslim. So, बड़े बड़े पॉइंट है लगभग यहाँ पे। मेरा आपसे सवाल है, आर दीज टू आर द ओनली बिलीव्स? लोगों के तो प्रेडिक्ट बिलीफ भी होते हैं ना, एथनिक भी हो जाते हैं, देयर आर मेनी अदर बिलीव्स टू, देयर इज काइंड ऑफ लॉयल्टी टू योर स्टेट, देयर कैन बी a kind of belief in some kind of gendered ideas, maybe ethnic ideas, many. लेकिन वो कहते the loyalty to these two beliefs is supreme for Muslims.
They can compromise on any other belief, but not these two. They are the ultimate faith of Muslims. Ultimate loyalty, ultimate identity is with these two principles for every Muslim. They can differ on democracy, they can differ on anything, but they won't differ on these 2 points. As long as they remain Muslims, these 2 things will remain common. क्या कहते हैं इसको? LCM, least common multiple. It's like that. That will always be the least of the things that are common between all Muslims, but they will remain common. HCF मुझे नहीं पता जी, मैं CHF का मुझे पता है, Swiss currency है, बाकी मुझे नहीं पता. Anyway, highest common factor. Okay, so no, it's not the highest one, it's the least one. Least in the sense that बाकी चीजें different हो सकती हैं, but इन पे difference नहीं हो. There will be no difference on these two. Allama says that similarly, Muslims may belong to different states, different territories, and they can have loyalty, they can have affiliation with their respective states. But the ultimate identity remains Islam. Therefore, the concept of nationalism in Islam, as the most important identity is based on religious faith, not on the basis of territory. Nationalism क्या है? Nationalism is the ultimate identity, and that ultimate identity is not driven by territorial factors. It is driven by the supreme loyalty is not to the state, it is to the faith. Therefore, in Islam, nationalism is linked with religion, not territory. ये समझ आ रहा है? अब इस पे ये सब थोड़ा सा पॉइंट दो तरह से यहाँ पे there are two interpretations of इकबाल है. आप दोनों बताऊंगा, लेकिन दोनों में क्या लिखनी है वो भी बताऊंगा. एक इंटरप्रिटेशन इकबाल की ये की जाती है, जैसे आपने सब कहा that Islamic nationalism, state boundaries must be abolished. तमाम मुसलमान, all Muslims should live in one state. But this is not what you will write in papers. You write the second interpretation. और वो क्या है? It is that he wanted Muslims to continue to live in their respective states, continue to be loyal towards their respective states, but
their supreme identity but the supreme identity of the Muslims must remain with Islam and fellow Muslims. In other words, Muslims can have multiple identities. They can have multiple loyalties. Yes, Amma, exactly. They can have loyalty towards Muslims around the world, and they can have loyalty towards the people within their territory, the people within their state. दोनों से लॉयल्टी हो सकती है, but supreme किससे होगी? That will be with the Muslims. That is ultimate, that is supreme. अब ये सब इस पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट है. अच्छा, मेरा आपसे सवाल है आप लोगों से. Who do you love more, mother or father? It's a very bad question to ask. I understand that. I always understand that. That's a bad question. But loving one, does it make you loving less others? You may love one, you may love somebody more, the others less, but loving, आप कहें ना, हम ऐसे कहते हैं, सच में कहते हैं कि हम मतलब घर में जब आते हैं कहते हैं कि जी आपको अम्मी अच्छे लगते हैं, अब्बू, अगर वो कहते हैं अब्बू अच्छे लगते हैं तो माँ नाराज हो जाती है, अच्छा मैं बुरी लगती हूँ. But loving one does not belittle your love for others. At least it's not a zero-sum game. You can have multiple loyalties. आप कैसे फैमिली को और फ्रेंड्स के दरमियान बैलेंस करते हैं? If you're attached towards your family, does it make you a bad guy in friends? No. We always, all the time, make choices, trying to balance out our preferences. So, just like that, it is very much possible to loyal to Muslims as well as loyal to the state. So you can have multiple identities, and we do have multiple identities. You are a Punjabi, but does it make you less Pakistani? It doesn't. So ये true. So the point is, if you are belonging to a particular ethnic group, it doesn't mean that you do not have the loyalty to your ethnicity, and if you have a loyalty to your ethnicity, that would make you a bad Pakistan. That's not what happens. So you can maintain multiple identities. Iqbal wanted Muslims to have ultimate choice for Muslims, but not at the cost of their identity to your people, their state. Dominant सिर्फ इस्लाम होना चाहिए, predominant इस्लाम होना चाहिए. अब इस आर्गुमेंट के फेवर में एक एग्जांपल जरूर लिखेंगे. अगर इकबाल पूरी उम्मा की एक ही स्टेट चाहते तो खुतबा इलाहाबाद में क्यों कहा कि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क चाहिए इंडिया के अंदर? मरियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई डोंट थिंक सो. जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूं, इस कॉन्टेक्स्ट में किसी ने डिस्कस करना है. वेस्टफेलियन ट्रीटी को कोई लेकर नहीं आएगा यहाँ. Nobody will bring the Westphalian Treaty over here. Nobody will bring that. Yes, Samad too. Yes. Acha. The point is, when he is talking about a northwestern Indian Muslim state or state, जो भी debate है, it shows that he was not trying to construct a state for the all Muslims.
He wanted the unity of Muslims, not unification of the Muslims. Yes, Wahab, true. True of the Wahab, true. He wanted the unity of Muslims, but not the unification of Muslims in the territory. Yes, Kamran, true. मैं फिर कह रहा हूं ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी मौजूद है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा, वो उसकी इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, बट आपने पेपर में ये भी लिखनी है जिसकी बात हम करते हैं. ऐसे क्लियर जी? नाउ द क्वेश्चन इज, अगला सर क्योंकि कहानी में पेपर में लंबा भी करना है, आखिरी पॉइंट है, 2 पॉइंट है, जल्दी जल्दी करते हैं. हाउ कैन यू डेवलप, अच्छा इसी को कहते हैं इस्लामिक नेशनलिज्म. दिस इज कॉल्ड द कांसेप्ट ऑफ उम्मा. This is called the concept of millat. This is called the concept of Islamic nationalism. Nationalism on the basis of Islam. The ultimate goal of Iqbal was to change the Muslims' perception about Islam. He wanted Muslims to make a distinction of Islam from the rest of the knowledge coming from the West. आसान लफ्ज़ों में कहते हैं जो गलती में यहाँ इंडिया में यूरोप जाने से पहले करता रहा, आप ना करना प्लीज. His ultimate goal was to make Muslims understand that Islam is a distinctive and different religion from the Western knowledge and scholarship. That's what he wanted. Okay, ये सब आखिरी में ले लो 5 मिनट, फिर आप 2-3-4 मिनट आखिरी में मैं लूंगा इंशाल्लाह. जस्ट 2 मिनट मुझे चाहिए थे. मैं क्योंकि इस लेक्चर आप पूरा करना है. So the point is, इकबाल जो है वो कहते हैं, he says that Islamic nationalism is the ultimate identity with Islam of the Muslims. But Iqbal says that this concept of Islamic nationalism or ummah requires the spirit of Madde Muhammad. ये जो उम्मा का concept है, Islamic nationalism है, that can be delivered by Madde Muhammad. फिर आप समझ देंगे Madde Muhammad. अच्छा, मध्य मोहम्मद कौन है? और आसान काम है. मध्य मोहम्मद इज द वन. जी एग्जैक्टली ट्रू. मध्य मोहम्मद कौन है? ही इज द वन हु हैज खुदी इन हिम. मध्य मोहम्मद अ प्रैक्टिकल मुस्लिम, अ मुस्लिम हैविंग खुदी. ज़िया को लिखकर बताएं ना, रिपोर्ट के लिए पूछूंगा आपको से पेपर में जो बड़ा हाल है. खुदी क्या है? हमें तो बचपन में कभी समझ नहीं आई, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब समझ आई मतलब खुदी क्या होती है. और मुस्लिम जी मैं इट्स नॉट ईगो दैट वे, हैज लिटिल मीनिंग ईगो होता है, बट इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज, बड़ा आसान है. बट इस खुदी इसी पे आ रहा है. अब सुनिएगा प्लीज, लिखिएगा नहीं, सुनिएगा. इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है अशरफुल मखलूकात का. ऐसा कॉन्सेप्ट है ऑल द क्रिएशंस ऑफ अल्लाह, और अल्लाह के अलावा तमाम चीजें क्रिएशन ही है. गॉड एवरीथिंग इज क्रिएशन. अब मेरा सुनने का पॉइंट आपने लिखा नहीं. अच्छा, मेरा सवाल सुनने गौर से. अल्लाह के अलावा तमाम चीजें क्रिएशन है, और तमाम जो क्रिएशन है उसमें इंसान सबसे अशरफ है, हायर है. अच्छा, इंसान के बारे में मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा. इज देयर अ वर्ड फ्रॉम कुरान आई गेस जिसमें इंसान को नायबे खुदा कहा गया, खलीफा का दिया गया, टाइटल दिया गया. आई गेस मेरा ख्याल है मैंने यही पढ़ा है कि खलीफा ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ, वाइसरेंट का इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, वाइसरेंट ऑफ अल्लाह, नायब. अच्छा, नाउ
Question is, खलीफा बना के भेजा. Okay, fine. अगला point. What is the concept of vicegerent? That man has to act on behalf of God. ऐसे ही vicegerent क्या कहता है? He carries out the instruction of the leader. God खुदा के अहकाम है, and we have to carry on. We have to carry out his orders, his injunctions. तो मेरा आपसे सवाल यह है, हाईएस्ट पावर्स, इन्फिनिट पावर्स हैं खुदा के पास. He has infinite, almighty, and he has delegated some of those powers to his vicegerent, to his खलीफा. ऐसा ही है, हमें शऊर दे दिया गया. यही कहा था ना इब्लीस ने कि मैं तो आग से बना हूं, मेरे पास खुदा ने कहा तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं. So man has been given the powers not because we are humans, but because we are deputies to God. As a deputy to God, God who has infinite powers, and we are his deputies, what are human power, what are human capabilities as vicegerent of God, इसकी realization को खुद ही करें. खुद ही is simply realizing the powers, the capabilities that people or humans have as a deputy to God. आप अगर CSS कर लेंगे ना, तो कभी कभी आप बड़े रैंडमली बच्चों की तरह बिहेव करेंगे, तो आपके गवर्नमेंट ने कहना है एक्ट लाइक अ CSP. आपको कहेंगे कभी कभी एक्ट लाइक अ CSP. तो इकबाल लोगों को कहते हैं एक्ट लाइक अ vicegerent of God. Know your potentials. मरियम अल्लामा इकबाल इस बात को नहीं मानते ना. We are not mere followers. He is not saying it. इंसान has infinite powers given to it, delegated to it by God. We only need to know it. We only need to realize it. देखें, मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि जब खुदा की वही पहाड़ पे आई, पहाड़ टूट गए थे. But when it came to the prophets, they hold on to it. They transferred that revelation to us. So humans have so much potential that even angels can't know. Yes, Sasha. Self-realization, self-actualization, knowing, discovering the potential of humans as vicegerents of God is called khudi. Is it clear? आसान असल में he wanted to tell people that you have immense powers given to you by Allah. Make use of that power. Yes, this is what we call खुदी. खुदी कैसे होती है? How can we realize our potentials? फिर वो मेथड देता है, वो कहता है we should go in ishq. Doing ishq, connecting with people, feeling attachment to the people without physical interactions is the power granted to humans only. You are worried about people getting killed because of COVID in America and in Europe and in Iran and Saudi Arabia and other places. Can animals be ऐसे ही करते हैं? Is there any species on this planet that also has this power of feelings?
No other species has such a power. Amna, animals can only know about people, they can feel about the people that they are physically in contact with. Can we? हम तो उसके बारे में भी सोचते हैं. Have we met Palestinians? At least I didn't. I only met one Palestinian in my life. But we feel for them. I haven't met somebody from Indian slums, but I feel for them. And that's the point. So realize your potentials. That's the thing. आप इश्क से कर सकते हैं, एक बॉन्ड से कर सकते हैं. Similarly, एक और बड़ा पॉइंट है और वो कहता है स्ट्रगल. If you do struggle, if you do test yourself, if you're kinetic, fakr is another example. Fakr means if you have self-controls, that self-control will make you realize how much potential you have. Yes, no, not true. अच्छा, फकर मतलब होता है आप अपने आप के ऊपर अपनी नीड्स के ऊपर फिजिकल नीड्स को कंट्रोल करना. फकर है, फिक्र नहीं है. फकर मतलब फकर वो चीज है, वो फिक्र करना. ये फकर दो नुक्ते वाली कॉस फकर. नफ्स पे काबू. रोजा रखते ना आप. रोजा रखने का क्या मतलब? यू कैन ईट बट यू डोंट ईट. That's the self-control. वैसे हमारे सामने आजकल कुछ आ जाए हम छोड़ते नहीं हैं. दिल करना शुरू हो जाता है, लंच खाना शुरू हो जाता है. But रोजा tells you that you have the potential to have self-control. So इस तरह की चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं, they are called खुदी. So खुदी, realization of खुदी through different tools is essential to create madde moment, and madde moment can develop the concept of ummah. जी, फक्र से खुदी आएगी, इश्क से खुदी आएगी, स्ट्रगल से खुदी आएगी, रियलाइजेशन आएगी. आपकी पावर्स क्या है? They all are tools of realizing your powers, and those realization खुदी will make you a madde moment, a true Muslim. And a true Muslim can understand the theory of ummah and all that. This is what is this theory. I hope basic idea आपको समझ आ गया होगा. थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. ओके जी, सवाल सब पहले यूसुफ को जल्दी सवाल ले लें. यूसुफ को सवाल था. मोहम्मद यूसुफ. यस अब्दुल्ला. यस. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. जी सर, मेरा 2 पॉइंट्स हैं कि खिलाफत वाली बात आपने पहले की. आपने कहा कि जब वो यूरोप में गए उन्होंने देखा कि हमारा कल्चर और यूरोप का कल्चर जो है वो इंटायरली डिफरेंट है. ठीक है. और दूसरी बात फिर हम लोगों ने की ये खिलाफत के लिए कि हम कहते रहे रेस किए जुम्मे के खुतबे के अंदर उन्होंने सपोर्ट किया खिलाफत के कॉन्सेप्ट को. तो खिलाफत का कॉन्सेप्ट तो मतलब कि कहता ही यही है कि हम बाउंड्रीज को मानते ही नहीं है. ठीक है. उसके अंदर तो बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो एक तरफ वो खिलाफत को सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो है आप अपनी जो स्टेट के अंदर रहें, और जो नेशनहुड का जो उन्होंने बताया जो आप बात कर रहे थे. दूसरी बात ये कि अगर आप इसकी बात करते हैं कि आपकी जो है लॉयल्टीज दोनों के साथ हो सकती हैं, स्टेट के साथ भी हो सकती है लेकिन मजहब के साथ भी हो सकती है एट द सेम टाइम. लेकिन जैसे फ्रांस जैसा मुल्क है उसके अंदर आप कैसे जो है अपने मजहब के साथ भी अपनी लॉयल्टी रखें, उसके साथ भी रखें, स्टेट के साथ भी रखें. स्टेट मतलब सिर्फ ये बात नहीं हो रही कि वहां पे कार्टून्स वगैरह नाउज़ुबिल्लाह छुपे हैं. उनकी जो लेजिस्लेशन है उसके अंदर जो है आप पर्दा नहीं कर सकती हैं औरतें, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. तो ये चीजें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती. 2 पॉइंट. थैंक यू सर. पहला पॉइंट यहाँ पर खिलाफत की बात है. यूसुफ, never assume that Khilafat by default rejects the concept of states, because इसका सोर्स कोई नहीं है by default. अच्छा, मैं एक मिसाल दूँ. जब ऑटोमन खिलाफत थी ना,
तो मुगल्स भी तो अलग स्टेट थे ना यहाँ पे, ऐसे ही था, यहाँ मुगल्स हम अलग स्टेट। तो आपको शायद ये हो कि डिस्पाइट द मुगल्स वर अलग सेपरेट स्टेट, हालांकि ये टर्किश के लोग ही हैं, लेकिन दे यूज्ड टू हैव अ कॉइन एंड obedience to, like symbolically they used to consider themselves under the khilafat. वो एक स्टेट नहीं थी, मल्टीपल स्टेट थी। although the Muslims in India, जो मुगल्स थे, they used to have a religious symbolization with the Ottomans. तो खिलाफत से आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो होगा, बट उसके अंदर आप पॉलिटिकली मर्ज हो जाएंगे, ऐसा होना जरूरी नहीं है। मुझे अल्लामा का नहीं पता पर्सनैलिटी कि वो खिलाफत को सपोर्ट करते नहीं करते, बट मुझे ये जरूर बताया कि इवन इफ ही वाज सपोर्टिंग खिलाफत, he would never meant to have a political unity with the Turks. He wanted the integrity to be preserved, not expanded. Preservation of Khilafat was the aim of Khilafat movement, not the idea that India should. क्या उनकी किसी राइटिंग में ये बनता है कि इंडिया के मुसलमानों को अलग के मुल्क बनेगा, वो भी खिलाफत का हिस्सा बन जाए? He never said that. He never did. He said that Iran should merge with Ottomans. He never said that. तो इस तरह की चीज नहीं। दूसरा पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जी मॉडर्न तौर पे रेलेवेंसी प्रॉब्लम बन जाएगी। आपकी दो आइडेंटिटीज हैं, स्टेट के साथ भी, रीजन के साथ भी। अगर आप रीजन के साथ आइडेंटिटी करेंगे तो स्टेट आपको निकाल देगी, कहां जाएंगे? दैट बिकम प्रॉब्लमेटिक। ये वाला पॉइंट है जो आप लेक्चर में लिख नहीं सकते, क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट है। ये लिमिटेशन है उनकी थ्योरी। ठीक, थैंक यू। अली को आखिरी सवाल लेंगे प्लीज। सॉरी आपके टाइम में ऊपर ले लिया। अली कौन सा? अली अख्तर, ये टॉप जी। वालेकुम सर, अल्टीमेट गोल आफ्टर, मतलब कि अगर फॉर सपोज के खुद ही का फलसफा हो जाता है, तो अल्टीमेट गोल क्या होगा आखिर में? कि पूरे सिस्टम को इस्लामिक सिस्टम कर दें, क्योंकि सिर्फ इस्लाम में ये नहीं है कि आप अल्लाह को एक मानते हो और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका नबी। इस्लाम आफ्टर दैट उसके इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम भी है। फिर क्या उसको इम्प्लीमेंट करना था बाद में उन स्टेट्स में, या अल्टीमेट गोल क्या? अल्लामा इकबाल खुशी हुआ इस्लामिक पॉलिटिकल, वो कहते हैं इस्लामिक कांसेप्ट डिफरेंट है। अब वो है क्या, उस डिबेट में ना जाते हैं ना हम बात करेंगे। और सर वो फिर पॉलिटिकल थिंकर कैसे हुआ? ये तो सर इस्लामिक स्कॉलर हुआ ना, एक इस्लामिक बात कर रहा था हर चीज में। पॉलिटिकल थिंकर किस टाइप से, या फिलोसोफर, पॉलिटिकल फिलोसफी? इसलिए दो वजह से, एक हम पाकिस्तान में रहे इसलिए एक बात, दूसरी वजह ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद उनकी थ्योरी को पॉलिटिकल थ्योरी मानता हूं। उसकी वजह ये है, पॉलिटिक्स इज अबाउट हायरार्की ऑफ पावर and he does define the hierarchy of power. State is subordinate to a broader idea. Is it not political debate? Islamic politics. बात इस्लाम की नहीं है, बात स्टेट की है। वो स्टेट के ऊपर एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एंटिटी कंस्ट्रक्ट कर रहा है, हायरार्की ऑफ पावर डिफाइन कर रहा है। दैट इज अ पॉलिटिकल डिबेट। थैंक यू। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू इंशाल्लाह।